The important thing, the few things which you have to know is about the diabetes, pregnancy, lactation, and there are few contraindications and there are few relative contraindications. One of the contraindications is the pregnancy and lactation. For most of the time, it is the ladies who come for the surgery, so it's very important that you do ask a very blunt question that are you in a pregnancy or you have got children, because all of this change, you all, as you know, are all, they affect the refractive. Same as with the autoimmune pathologies, endocrinology, neurological pathologies, skin problems, immunocompromised patients, and medications. And what are the important medications which you think about? One of them is the treatment for acne. You see, this also, iron retinol is one of those which can blur the vein or it can affect the vein. So these are the few drugs which you should remember. They have to stop before you can go for the surgery. So most important thing, lactation, pregnancy or lactation may be important. Like make sure that the patient has stopped lactating and another give them 3-4 months. और इसमें एक और extreme important चीज disease के अलावा is contact lens itself. I'm going to talk about it now. क्या चीज़ें हैं refractive state? Now this is very important thing. कि आपने जब एक पूछा तो आपने सिंपल से सवाल करें पाकिस्तान में तो रिकॉर्ड मिलता नहीं. अगर रिकॉर्ड नहीं है तो you ask them कि क्या refractive आपने कब glasses change किए? If they have changed और change 0.5 से ज़्यादा है within the last 6 months, तो आप उस patient को again the refractive surgery is not there. Then you also ask about the age. Age of the patient is very important. You are not going to surgery less than 18, and we have seen in Pakistan, everybody of our colleagues that people have been operating at the age of 16 and 17 also. So it's very important. 18 and 18 is also a limitation. I feel that even 18 is less. We should go for 19 and everything, and some people even do up to 20. But there's the international chart है कि 18 से नीचे सवाल नहीं पैदा होता because अभी तक आपकी नज़र में वहाँ नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं आती. Contact lenses is very important. आपने contact lens जब भी आप measurements लें, you have to stop it. The international standard is up to 2 weeks, but minimum 1 week आपने contact lens उतारने because उसकी diaphragm वापस आती है, dry. You know about the dry eye syndrome, and then the corneal curvature changes which occur with the contact lens. That has to be stopped before we can do this kind of surgeries. If it is a keratoconus is completely contraindicated. Abhi, there are ways and means of doing them. We are not going to discuss things for, but normal for every patient, if you find him at keratoconus, there's no question you're going to do for refractive PSC. Monocular patient is relative contraindication. अगर उसकी एक आंख है और आप देखते हैं कि जो वो कराना चाहता है, ये में भी एम्ब्लॉयपिक की नजर आए, लेकिन जो भी कराना है आपने उसको ट्रायल कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं, ये ग्लासेस देकर उसको पहले चेक करना, फिर देने मोनोकुलर और एम्ब्लॉयपिक आइज के लिए. Hepatic keratitis, recurrent corneal abrasions, ऐसी किसी किस्म की जो problems हैं, you have to sort them out. In पाकिस्तान में सबसे बड़ी important है allergic keratoconjunctivitis, which can lead to keratoconus, will also lead to these things. So important है कि आपने वनल कटार या स्प्रिंग कटार और allergic keratoconjunctivitis को treat किया हुआ है, and उसके साथ keratoconus is interlinked, so उसके साथ आपको देखते रहना पड़ेगा. उसके बाद dry eyes, again you have to check, you make sure that the patient has got no dry eyes. Because why? जो हम refractive surgery करते हैं सामने जो जिसमें मैं अभी scope कर रहा हूँ femoral LASIK में, there are more chances because जब आप उसका flap उठाते हैं, उसके बाद nerves कट जाती हैं, तो for next 6 months उसके dry eyes के chances बढ़ जाते हैं normal patient के. So if there is like this, so you make sure कि जी आप उसको जो है artificial tears after the surgery for 3 to 6 months तक देते हैं. So therefore, if it's a known case of dry eyes, तो आपको you have precautions. Glaucoma, allergies मैंने बता दिया, पुरानी vitreoretinal surgeries, corneal surgeries, previous refractive surgeries are all relative contraindications, and we are not going to touch them, but you have to know them and you have to be very cautious about it. And if there's any pathology in the retina which leading to any problems, this may be compromised, so this is kind of a relative contraindication during the surgeries. So again, then coming down, what are the examinations which we are supposed to do? अभी ये तो आपने this all which I have discussed is something is a history taking, or even in a lounge in your home you can ask them. But now we go to the clinic and so the specific. Autorefractive meter is part and parcel of every place where we go, and now we have to check them. And the important thing is uncorrected distance vein, correct distance vein, use of cross-center, duochrome test, cycloplegia refraction, and what is the most important of the thing? There are different ways, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन most important thing is कि best corrected vein of that patient क्या है, and that you have to be sure about कि उस पेशेंट की क्या है. There are different ways. I'm not going to go into detail because एक लेक्चर पूरा इस पे हो जाएगा, लेकिन ये आपको है कि बेस्ट करेक्टर वेन किस तरह से लेनी है,
और इन hypermetropes it's very important that you do a cycloplegic reflection because उसमें और बड़े problem होते हैं which we're going to discuss later on. And it's also very important to check the vein on the day of the surgery, the best creatinine vein उस वक्त क्या है. Don't take results which is 3 months old. Don't take results which has been somewhere else has been done. I always do my cases on my own machine, everything which is calibrated and so this is also very important. Other things we have to see, all of the things which is more discussed हो गया, and we have to make sure. And the last point is dominant eye. Again, आप लोगों के लिए very important. You have to know because why it is dominant eye. इसमें सबसे important चीज़ जो होती है कि उस eye की हमेशा भी होती है. It's all the time. You have to tell your patients before and take the dominant कैसे पता होना चाहिए because if you want to do different kind of surgeries होती हैं जिसमें आप ये होता है कि एक आँख को distance के लिए ठीक कर लेते हैं, एक को आप नज़दीक के लिए ठीक कर सकते हैं, especially in breast package which is possible. So you should be knowing which is the dominant eye. And moreover, आज जब surgery कर लेते हैं तो dominant eye हमेशा ज़रा बेहतर होती है. You tell your patient beforehand यार एक आँख में थोड़ा सा दोनों में difference होता है because all the time the patients are doing checking their vein. So you tell them beforehand कि क्या थोड़ा सा difference दोनों में आ सकता है. Oh, this crossover. Right. नहीं मैं पीछे जा रहा हूँ आगे जा रहा हूँ. किधर चला गया? नहीं आगे जा रहा हूँ. Right. We will go to the now. What are the specific tests which we are going to do? Specific test में सबसे important is checking the corneal curvature. And the corneal curvature you can do on an auto refractive में भी आपको आ जाता है. And also you've got special measurements. And one thing is there, just to pick up tits and bits में आपको बताता जाऊँगा जैसे कि you aim not less than 36 diopter होना चाहिए और maximum आपका 52 steep and दोनों axes में इतना होना चाहिए. Then how do we check? What are the different ways and means of it? One is machine is known as the topography. This is the topography is basically tells you the anterior surface of the cornea. That the placido rings के साथ आप check करते हैं, उसमें different है. And this is the elevation reflex and which tells you the corneal surfaces. Again, the importance of corneal surfaces come on. Corneal surfaces के साथ आएगा dry eye. If the patient is a dry eye, तो आपके tests सारे खराब हो जाते हैं. So you make sure that it is well lubricated, and then you can do this test. And what do you see? There are two different machines coming up at the moment. I'm doing Galilei. This is one is Cirrus. These and then we have got Pentagon. There's a complete one-day lecture which we can talk about these different machines. But I'm just giving you an overview that with these machines, what we do check, we check the anterior surface of the cornea. Then we have got a Chamfleck method in which we check the posterior corneal surfaces. Then we also check the thickness of the cornea. And then all of this are required to calculate कि आपने surgery जितनी है जिस patient की उसमें आप क्या है. What is the importance of all this thing? The importance of this thing है कि आपने जो surgery करनी जो mechanism है आप cornea को change करेंगे, उसकी shape change करेंगे. जब आप shape change करेंगे तो जैसे मैं patients को example देता हूँ कि it is just grinding the cornea. The laser grinds the cornea. जब वो grind करता है तो उसकी thickness कम हो जाती है. तो आपने देखना है कि उस thickness कितनी है and you after the surgery you have to calculate it beforehand because जितना आप thin करेंगे it is very simple as rule है. इस छत की एक आपको specific bearing है. अगर आप उसकी weight bearing नहीं होगी तो ये छत sink in कर जाएगा. आपने calculate पहले करना होता है कि कितना आप पे बर्दाश्त कर सकते हैं. That is what it is. And that is how we calculate beforehand that patient is not going to do what the term is called ectasia. तो उस चीज़ में जाए जिसमें फायदे के बजाय नुकसान है. So these are the tests which we go through. We do the pachymetry, which is the thickness of the cornea. Then we go for PTA calculation. What is PTA calculation? PTA calculation is one of the tests in which hypothetically before आप उसकी देख के उसकी कितनी myopia है उसको लेके उसके साथ आप उसकी आपने flap की thickness कितना बनानी है उसको calculate करके आप you try to find out the stromal bed कितना पड़ता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. And that इसमें सारे में जो होता है what we get out of this thing is कि आपको कितना alter होता है. We come to a 40% is the maximum which we can go. I'll just give you a brief thing on this thing कि ये आप चालों को लेकिन you have got ways and means of doing these things. आप उसका ऑप्टिक जोन कम कर सकते हैं जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं या आप उसकी जो फ्लैप आते हैं उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं टू मेक श्योर कि आपकी थिकनेस ऑफ द बेड रिमेन स्टेबल which मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ. Again, this is another in Pentagon we can check these things and this is the most important thing. एक चीज़ होती है जब भी कोई आपको बीमारी होती है उसमें आप बीमारी में आप ये देखते हैं कि
किस बीमारी से आपको प्रीएम्प्टिवली आपने करना होता है, क्या ये बीमारी आ सकती है या नहीं आ सकती। तो उसको ना हम पहले ये करते हैं कि आप चेक करते हैं कि व्हाट हाउ मच वी कैन मेक श्योर एंड कमिंग डाउन। एक नॉर्मल कॉर्निया की थिकनेस जो होती है इज मोर देन 500 नॉर्मल कॉर्निया की माइक्रोन। एंड इफ आपकी सर्जरी के बाद अगर वो 300 से कम हुए, मैं 280 पे करता हूँ, कोई 300 करता है, लेकिन अगर आप 280 से कम जो किताब कहती है, जो FDA अप्रूव्ड है, वो 250 तक है, लेकिन वी ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड। उससे कम आता है तो यू आर लीडिंग टू डैमेज टू द पेशेंट, सो विच वी डू नॉट वांट। तो पेशेंट का कॉर्निया में डैमेज है, सो यू मेक श्योर दैट द रेजिडुअल बेड इज मोर देन 280 माइक्रोन्स। सो ये हम कैलकुलेट करते हैं। अदर चीज़ें आप क्या देखते हैं, आप हिस्ट्री में जो मैंने एक चीज़ आपसे मैंने जान के उससे बताया नहीं था, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेशेंट से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या ऑक्यूपेशन क्या है। एज द पेशेंट से इज अ नाइट ड्राइविंग करता है, तो आप पूछेंगे उससे क्या काम है आपका। एंड इफ ही सेज कि नाइट में ड्राइविंग में डिफिकल्टी होती है, मुझे हेलोज होते हैं, मुझे ऐसे नॉर्मल विद ग्लासेस होते हैं, तो टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट डूइंग दिस सर्जरीज, बिकॉज ऑल ऑफ दिस सर्जरीज विल मेक अ प्रॉब्लम फॉर दिस पेशेंट्स। तो उसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं एंड एबरेशंस उनको कहते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस थिंग, लेकिन जैसा पीपल डायलेट करता है और जितना ओल्ड एज होता जाता है, इसलिए सो वी चेक द पीपल साइज आल्सो। इफ मिजोपिक एंड स्कीटोपिक होता है रात के वक्त एक पीपल कितना उसका डायलेट होता है, अगर एक 7 से ज़्यादा होता है, दैट इज अ केस जिसमें आपको एबरेशन ज़्यादा हो सकते हैं। सो वी कैलकुलेट दोस थिंग्स एंड दिस थिंग। Comma, different spherical aberrations are very important. This is something which is new, which is coming up nowadays. This is very important has taken because आप occupationally तो occupation को improve करना चाहते हैं। How we do a barometer, but this was a premise is one of the things when we have got a wavelength analyzer, a barometers कहते हैं, and we check through these things. I'm just going to skip all those things ताकि we'll finish on time. Then we come to treatment. Now I'm going to talk about 2-3 things. आपको वर्ड्स नहीं होते, कन्वेंशनल लेजर पता था, फिर उसके बाद वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज्ड लेजर आ गया, एंड देन वी हैव गॉट नाउ वेव फ्रंट गाइडेड, इसको टोको गाइडेड भी कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? आपको याद रखिए जब शुरू हुआ था, व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ, व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज मेक द लाइट टोको, हां, व्हाट वी यूज्ड टू मेक इट अ फ्लैट कॉर्निया पोस्ट स्टेट, ये स्टैंडर्ड लेजर, लेकिन इसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव जो होता है ना एबरेशन ज़्यादा हो जाते हैं। इसको कम करने के लिए व्हाट वाज स्टैंडर्डाइज्ड वाज ऑप्टिमाइज्ड लेजर। इसमें ये होता है कि इसको थोड़ा सा सरफेस को प्रोलेट कर देते हैं, ये आपकी सरफेस ये हो जाती है, ये प्रोलेट हो जाती है, फ्लैट कॉर्निया से इस जगह को ट्रीटमेंट करने के प्रोलेट कर देते हैं, इससे स्फेरिकल एबरेशन कम हो जाती है, इसे एबरेशन फ्री वाला भी कहते हैं। उसके बाद जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ आपकी कॉर्निया की सरफेस रेगुलर नहीं है, डिसेंट्रल कॉर्निया है और प्रॉब्लम्स होती हैं, देन वी गो फॉर अ कस्टमाइज्ड। अगेन फॉर दिस एवरीथिंग हैज टू बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली एंड देन वी कैन डू इट। एंड इन विच इन सारी कंडीशन से फायदा ये होता है कि आप हायर ऑर्डर एबरेशंस काम करते हैं, जो मैंने कहा क्लिनिकली किस तरह नजर आते हैं, हेलोज, ग्लेयर, स्टारबर्स्ट एंड नाइट विजन प्रॉब्लम्स, इन सारों को रिड्यूस करने के लिए। सो ये दिस इज जस्ट अ वर्ड आई व्यू दे रहा हूँ, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कन्वेंशनल और वेवफ्रंट में एबरेशंस कम हो जाते हैं, एंड आई विल ऑप्टिमाइज इसमें होता है। एंड देन व्हाट वी डू, अभी एक नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, टोको गाइडेड। अगेन दिस इज फॉर हायर एस्टिग्मेटिज्म व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। आईज विद इंक्रीज हायर ऑर्डर एबरेशन होते हैं, क्वालिटी ऑफ विजन अच्छी नहीं होती, नाइट विजन प्रॉब्लम्स होती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी होती है। प्रीवियस जो आपकी ट्रीटमेंट है इज डिसेंट्रल, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। And so these are the conditions which, and then we, जैसे मैंने कहा था कि we go through a barometer और pyramid जिसके साथ हम चेंज करते हैं। So then all of this thing, it is very important और कि हम ये सारा we go